यहाँ पे हमें पहले सबसे VPC नेटवर्क बनाने के लिए कहा गया है जिसमें हम ये सबनेट डिज़ाइन कर रहे हैं एंड सबनेट में हमें क्या डिटेल्स डालनी है वो हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से बताया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड रीजन यूएस सेंट्रल 1 है तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे। IPv4 हमने डाल दिया है एंड इट्स डन। ऑलराइट, इक्विवेलेंट कमांड लाइन। ऑलराइट, हमें इसका कोई यूज़ अभी फिलहाल करना नहीं है। वी विल क्लोज इट एंड क्रिएट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा VPC नेटवर्क बन चुका है। जाके एक बार चेक माय प्रोग्रेस करेंगे एंड दिस असाइनमेंट इज कंप्लीटेड। अब हमें क्लाउड शेल खोलना है आगे के स्टेप्स के लिए। इसमें आपके पास ऐसे पॉपअप्स आएंगे जिसमें आपको बस कंटिन्यू एंड देन ऑथराइज करना है। एंड योर क्लाउड शेल इज स्टार्टेड। नेक्स्ट, हमें ये कमांड्स पेस्ट करने इन सीक्वेंस। यहाँ पे अभी एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है जैसा कि हमने बनाया, बस इसमें हमने कमांड्स यूज किया। नेक्स्ट हम उसके लिए एक सबनेट बनाएंगे, ये उसके लिए हम कमांड रन कर रहे हैं। उसी प्राइवेट सबनेट VPC नेटवर्क में हम यहाँ पे एक सबनेट बना रहे हैं एंड इन द नेक्स्ट कमांड हम उसका दूसरा सबनेट बना रहे हैं। सो यस, देयर आर टू वेज। आप मैन्युअली भी बना सकते हैं एंड इधर से भी बना सकते हैं यूजिंग कमांड्स। ऑलराइट, सो एक बार हम चेक माय प्रोग्रेस करेंगे एंड इट्स डन। सो एक बार चेक करने के लिए हम जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क लिस्ट कमांड को रन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से नेटवर्क्स अभी चल रहे हैं। एज यू कैन सी 4 नेटवर्क्स टोटल हैं जो डिफॉल्ट एंड माई नेटवर्क पहले से थे। मैनेजमेंट नेट हमने मैन्युअली बनाया एंड प्राइवेट नेट हमने कमांड का यूज करके बनाया। नेक्स्ट हमें इस कमांड को रन करना है VPC नेट सब नेट्स को लिस्ट करने के लिए। उसमें हमने नेटवर्क्स को लिस्ट किया था, इसमें हमने सबनेट्स को लिस्ट किया। अब हमें एक फायरवॉल रूल बनाना है। उसके लिए हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं यहाँ से एंड देन इधर से हम फायरवॉल पे जा सकते हैं। फायरवॉल में जाने के बाद हमें एक बार क्रिएट फायरवॉल पॉलिसी करना है। नहीं, एक मिनट, हमें फायरवॉल रूल बनाना है, ये गलती मत कीजिएगा। एंड जैसा हमें दिया गया है हमें उसी का फॉलो करते हुए
उन्हीं डिटेल्स के साथ वो रूल बनाना है। मेक श्योर ऐसे कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस ना हो, इट वोंट वर्क देन। टारगेट should be all instances in the network। IPv4 रेंज में हमें ये आईपी एड्रेस डालना है। नेटवर्क में हमें मैनेजमेंट नेट सेलेक्ट करना है एंड देन हमें कुछ स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स में जाके TCP एंड IM ICMP को सेलेक्ट करना है। टाइप में आप देख सकते हैं 22 एंड 3389 एंड देन अदर में जाके ICMP क्रिएट। सो हमारा फायरवॉल रूल बन चुका है। एक बार हम चेक में प्रोग्रेस करेंगे। अब हम क्लाउड शेल में इस कमांड को रन करेंगे। एंड क्लाउड शेल को उठाने के लिए हम फिर से एक बार इसे रिस्टोर कर सकते हैं एंड इट विल बी बैक। अब इस कमांड से भी हम एक फायरवॉल रूल बना रहे हैं, लेकिन कमांड से, और हमने वो फायरवॉल रूल बनाया था एक मैनुअली। अब हम एक बार चेक माई प्रोग्रेस करेंगे एंड इट्स डन। बाकी हम फायरवॉल रूल्स को चेक करने के लिए इस कमांड का यूज कर सकते हैं, वो भी वैसे ही लिस्ट कर देगा। Now we will be moving on to task 2, create VM instances। We will be creating 2 VM instances। So for that first we have to minimize this and हम इधर से VM instance खोलेंगे। VM instance खोलने के लिए मैनुअली आप यहाँ पे सर्च करके भी जा सकते हैं, लेकिन VM instance खोलने के लिए आप कंप्यूट इंजन से VM instance पे जा सकते हैं। Now हमारे पास 2 इंस्टेंसेस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, लेकिन हमें अभी एक अलग इंस्टेंस बनाना है विथ द गिवन डिटेल्स। सीरीज में E2 एंड E2 माइक्रो का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे E2 एंड मशीन टाइप में जाके E2 माइक्रो को सिलेक्ट करना है। आफ्टर दिस नेटवर्किंग में जाके हमें सब नेटवर्क्स सेलेक्ट करने हैं। ऑलराइट, हमें सब नेटवर्क क्रिएट कर देना है। इट्स ऑलरेडी हियर, नो नीड। देन हमें उसे क्रिएट करना है। जब तक ये क्रिएट हो रहा है हम एक बार इधर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम ऐसे ही एक इंस्टेंस बनाएंगे विद इट्स सब नेटवर्क सेलेक्टेड, बट दिस टाइम विद कमांड्स। अभी हम वेट कर लेते हैं एक बार इसका कंप्लीट होने के लिए।
All right, so now as it is created, we will be checking my progress and it's completed. Now we will be doing the same steps, but this time with codes. As you can see, यहाँ पे हम एक इंस्टेंस क्रिएट करें जिसका नाम प्राइवेट नेट VM1 है, जोन US सेंट्रल सी जैसा कि उसमें था, एंड मशीन टाइप E2 माइक्रो विद सब नेटवर्क प्राइवेट सबनेट 1. So it's basically the same thing, but we are doing it from Cloud Shell terminal. Then again, we can just run this instances list to check. All right, so it's created. So we'll be checking our progress down and it's completed. Now, now let's move on to task 3. We have here, all right. So we have to go into the mynet VM2 instance and all right, mynet VM1 instance and launch SSH. For that, we will be minimizing it. And now for SSH, you can click here, mynet VM, authorize. All right. So SSH session has been opened. Now we have to test the connectivity of mynet VM2's instance external IP by running the following command. So we have to first take the external IP addresses of mynet VM2, management net VM1, and private net VM1. So what are external addresses? For that, first of all, open your notepad. Then in the notepad, you can copy and paste the external addresses. All right, so one of our VMs is not visible right now, and here it is, private net VM1. It can happen, so you can just refresh from here. All right, now that we have all the IP addresses, we will be running the commands now. We'll open the SSH session, and then from here we will be pinging it. Remove this portion and then use this. And as you can see, it means it is connected.
Now we will be doing the same with the other IPs. Copying this and then pasting here. We will run this command and yes, it is also connected. Same for private net. And yes, it's also connected. Now we will be doing the same things with the internal IPs. So first, we will go to the VM instances and select the internal IPs and replace it carefully. Oh my bad. Now we will be pasting these commands there to run it and connect it. Okay. It's showing that it somehow should not work because of 100% packet loss, but it is somehow working. We will discover the issue later. So we will just continue with the lab for now. Now we will be creating another VM instance for our task 4. First, we can just remove this SSH and then from here we can restore our Cloud Shell window. We can also make the VM instance from here and we can also make the VM instance manually.
For now, I will show it manually. So as you can see, it has said E2 standard 4 and we don't have here. We can just go to standard and select from here. Next, from networking, we have to add this networking interface. We will add another network interface here. And then we will add another. It will be my network. I think, yeah, it's my network. So after this, we'll be doing, all right, we have to just create it now. No more steps left. We have added all three subnets. Now, while we are waiting for VM appliance to complete, we can just go and read the next steps. So VM appliance is created by now, so we'll be clicking check my progress. After this, you don't have to do anything and the lab is completed. Now, before ending the lab, always you should check that you have checked all the check my progress and completed it. In case it's missed, you won't be able to get the score and the lab won't be completed. Alright, so we have checked that it has completed. Now we can end lab.